Hi guys, in my last video I already told you about the 10 vocabulary which I have taken from the New York Times. So I already told you that 10 most usable and most useful vocabulary of daily life. So New York Times is a very famous magazine of the world. So just I taken some vocabulary in my last video. So first watch that video and then come again and watch this video. So daily basis I'm coming with some new vocabulary, and which is very helpful. And I already told you that speaking English, two things is important. First is tense and the second is vocabulary. So that's why we are only working in the vocabulary. We already covered the tense. So first was the tense. If you don't know about the tense formula and all, where I already gave you the more than 100 examples of each tenses. So here I have some examples, like first one is tended. Tended. Some similar words like stands, seems, or appear. So these are some similar word, and if you want to know how to pronounce this tended word, so we will just listen once how to pronounce this one. Just listen carefully. Tended, Tended. tended, tended, Tended. So this is tended. Okay, tended. So this is the tended, and we can use in the different ways in the sentences. So there's some examples like his blood pressure tended to stabilize. His blood pressure tended to stabilize. And the next is he carefully tended his sunflower plants all summer. Tended, you can understand here is a tended is used because it's a showing that work that his blood pressure tended to stabilize. It will be normal, it will be stable. So that one is reflecting, that one is one indicator. Tended. He carefully tended his sunflower plants all summer. He carefully tended, he will take care of the sunflower plants all summer. She lovingly tended her little garden. She lovingly take care her little garden. So here it's coming like take care, taking care, something like this. Okay, na? So his stands or appear. This one is a similar one, which is the meaning of this tended meaning. So hospitals have tended to overlook this need. Hospitals have tended to overlook means they will seems to overlook this need. Okay, na? So the next one is he tended to her every day, every need. He tended to her every need. He always take care of her every need. Okay, he always stands to her every need. The survey revealed that top earners in the country tended to be men. So it's related to the men. Most people are most people are rich and they are men. So that is tended, which is indicating to the man. Next one is confront. Confront is similar word is face, encounter, cope. Okay, this is the similar word confront. How to pronounce this confront? So just listen this carefully. confront, Confront. confront, confront, Confront. So that is confront. Confront. Some sentences like he is willing to confront problems directly. A soldier has to confront danger. It's time to confront him with our suspicious. Okay, confront means facing, is facing or encountering. Okay, encounter means not the जो पुलिस करता है वो, that one not encounter. Encounter means you are facing something. Okay, you are facing something, confronting something. We try to help people confront their problems means people should confront their problem, people should face their problem, so they will be strong like this. Okay, na? So that is the confront. Next one is scathing. How to pronounce this scathing? Scathing means scathing, scathing. Okay, some similar word we will look. So some similar word like bitter, spicy, okay, penetrating, pungent, tart, like this. Okay, these are some similar word.
You can remember this one. I know you will be shocked to see this new word. So don't go this one. You can just remember one by one. Bitter, spicy. I think you remember. Bitter, spicy means we know, right? Means बहुत मसालेदार. Bitter, बहुत कड़वा. Examples, some sentences like he made a scathing attack on the statement. He made a scathing means बहुत तीखा attack on the statement. He was very scathing about the report, saying it was inaccurate. Her father gave her a scathing look, scathing, डरावना look, or their criticism was scathing, very bitter, very bitter. Okay, that one was scathing. Phrase. Next is phrase. How to pronounce this one? Phrase. Listen. phrase, Phrase. Okay, means muhavra, something like poetic. Phrase. Some similar word like clause, expression, protasis, like this. Some examples we will look like this one. She used the phrase survival of the fittest. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस वन वाज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बाय द वे ये डार्विन का थ्योरी था. ओके, डार्विन का, जिसमें डार्विन कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना फिट रहेगा वो उतना सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो समय के साथ लुप्त हो जाएगा. तो आपको लुप्त नहीं होने देंगे, आपको हम नए नए वर्ड सिखा कर ही रहूंगा मैं. आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस प्रतियोगिता में, यहाँ पे जो इतना कंपटीशन है, इसमें आप पीछे नहीं रहोगे. सो आप सरवाइव करोगे, फिट रहोगे तो सरवाइव करोगे. फिट का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं है, फिट का मतलब इंटेलिजेंसी से है, मेंटलिटी स्ट्रांग से है. ओके, द फ्रेज हैज बिकम ऑलमोस्ट मीनिंगलेस. द फ्रेज हैज बिकेम ऑलमोस्ट मीनिंगलेस. फ्रेज जो कि मुहावरा है पूरा तरह से यूजलेस हो गया, मीनिंगलेस हो गया, नो यूज, दैट वन. So next one is phrased. Phrased. So phrased. How to pronounce? phrased, Phrased. Okay, phrased. So here you can see that how to use this one. Only just to added that D and the meaning is changed. So meaning changed, like he phrased his criticism in careful terms. He phrased his criticism in careful terms. Means he has taken this criticism in a positive way. Her order was phrased as a suggestion. Her order was phrased, means her order was taken as a suggestion. Okay, the statement was very carefully phrased. The statement was very carefully phrased. She phrased the explanation in very simple terms. She phrased the explanation in very simple terms. उसने बहुत ही आराम से अपना explanation दिया, बहुत ही simple भाषा में. She phrased her excuse politely. उसने अपनी बातों को बहुत ही नरमी के साथ रखा. Okay, phrased. Next one is overlapping. 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 How to pronounce? overlapping, Overlapping. Some examples are like this. The floor was protected with overlapping sheets of newspaper. Overlapping means many newspaper in one of the above. Many newspaper are there. Okay, in one of the above, one by one. Many are the, एक लाट लग गई है न्यूज़पेपर की. So that's why it's showing overlapping sheets of the overlapping. इसके ऊपर overlapping रखना. overlapping, एक दो ऐसे ऐसे पूरी लाट लगा देना. overlapping sheets of newspaper. This gives them overlapping fields of view. Overlapping fields of view means different view है. Overlapping fields of view. Okay, spinning. So spinning को कैसे प्रोनाउंस करोगे, एक बार सुनो. spinning, 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 spinning. So this is the word spin. बचपन में लट्टू घुमाते थे, लट्टू कैसे घूमता था, गोल 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 गोल, स्पिन होता ना वो, SPIN, स्पिन. उसी तरह से कभी आप गोल गोल घूमे हो, गोल 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 गोल, हाथ में हाथ पकड़ के दोस्तों के संग में, तो आपको माथा घूमने लगता है, वो स्पिन. Okay, the plane was spinning out of control.
मीन्स प्लेन घूम रहा है ऐसे 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 करके, आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, द स्पिनिंग व्हील was a Indian invention. द स्पिनिंग व्हील मीन्स घूमता हुआ चक्का का आविष्कार इंडिया में हुआ। ओके, स्पिनिंग स्पिनिंग, माई हेड इज स्पिनिंग मीन्स मेरी माथा घूम रहा है, मेरा माथा घूम रहा है, इतना मत घुमा दो मुझे जो कि मैं घूमने लगूं, इसे बहुत ज्यादा घुमा दिया है। ओके, द चिल्ड्रेन वर स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, बच्चे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। Spinning is one of my hobbies. Means spinning my one of the hobbies means here someone used like traveling, 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 tourism. This one used like spinning, spinning, spinning. Okay, घूमना मेरा शौक है, हॉबी है। माई हेड वॉज स्पिनिंग फ्रॉम द वाइन, कितना दारू पी लिया आपने, कितना वाइन पी लिया, आपकी माथा घूम रहा है यार, इतना ज़्यादा नहीं पीना है, लिमिट में पीना है, सप्ताह में एक दिन पीना है, मजाक कर रहा हूँ। माई हेड वॉज स्पिनिंग फ्रॉम द वाइन, मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया वाइन को और मुझे चक्कर आने लगी। ओके, तो चक्कर आने लगे, समथिंग लाइक दिस, बट मीनिंग ये नहीं है, मीनिंग है माई हेड वॉज स्पिनिंग फ्रॉम द वाइन, मैंने जब दारू वाइन को टेस्ट किया, वाइन से मुझे माथा घूमने लगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज, हाउ टू प्रोनाउंस, लिसन केयरफुली, contingencies, कंटीजेंसीज, contingencies, contingencies, contingencies. Okay, contingencies, contingencies means all of the work or anything, whatever you are doing means just take the example so that means all the word if you see in Hindi now, you हिंदी में आपको बहुत ही डाउट रहेगा, हिंदी से आप निकलो and just start and think in English only. Okay, I need to examine or consider all possible contingencies. Here we can use anyone. I need to examine all possible contingencies. I need to consider all possible contingency. जितना भी मौका है, जितना भी मेरे पास रास्ता है, सभी को पॉसिबल कंटीजेंसी, सभी रास्ता को मुझे तय करना है, सभी रास्ता को मुझे ट्राई करना है। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंटीजेंसीज, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंटीजेंसी, जितना भी ऑप्शन है सभी कंटीजेंसीज को आपको प्रिपेयर्ड करना है, जितना भी आपके पास पेंडिंग है, कुछ भी काम या कुछ भी। यू मस्ट बी एबल टू डील विथ ऑल पॉसिबल कंटीजेंसीज, यू मस्ट बी एबल टू डील विथ ऑल पॉसिबल कंटीजेंसीज, सभी पॉसिबल कंटीजेंसी, रुकावट या फिर जितना सबके साथ आपको डील करना है। ओके, दैट वन इज कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज। नाउ नेक्स्ट वन इज illuminate. Illuminate is a very important word, you can use different way, so this is very important, just listen how to pronounce. illuminate, 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 roshan, light. Okay, something like this, roshan, light. So example is they use games and drawings to illuminate their subject. Illuminate their subject means game and drawing they are using to focus to their subject. Okay, so ये रोशनी डाल रहा है। The study of the present also helps to illuminate the past. The study of the present also helps to illuminate the past. जब प्रेजेंट में आप पढ़ाई करते हो तो पास्ट की अतीतों पर भी उस पर रोशनी पड़ जाती है। Small lights illuminate different points on the map. Small lights, small जो light है वो illuminates different points of map, वो different types के map दिखाते हैं। Okay, she said she came to help illuminate the area with her headlights. She said she came to help illuminate the area with her headlights. वो हेल्प करेगा, इल्यूमिनेट करेगा रोशनी से, जिससे कि वो अपनी जो हेडलाइट मीन्स जो भी उसका मकसद है, जो भी ये है, वो उसे पूरा करे, अपनी उस रोशनी के द्वारा वो उसे पूरा करेगा। इट्स द क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज दैट हेल्प्स टू इल्यूमिनेट द क्वेश्चन।
ओके, क्लैश और डिबेट से ही या फिर डिस्कशन से ही किसी क्वेश्चन पे हम लोग कुछ उसका रिजल्ट निकलता है, उस पे हम लोग कुछ नया हमें आउटपुट मिलता है। ओके, सो क्लैश इज हेल्दी नॉट गुड, जब तक हाथापाई पे ना आ जाए। ओके, सो दैट इज द हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, healthy questioning. The next one is deep. Okay, deep. How to pronounce this deep? Just listen carefully. deep, 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 deep. Okay, deep means बहुत गहरा, deep बहुत गहरा। deep, deep का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है deep, depth, depth, deepest। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। ओके, स्टिल वाटर्स हैव डीप बॉटम्स। ओके, अभी तक पानी का जो है बहुत ही गहरा अंदर का डीप है, जो गहराई है ज़्यादा है, बॉटम नीचे का। ओके, नीचे का वो पानी डीप है। डीप रिवर्स मूव इन साइलेंस। जो गहरा नदी होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे गहरी नदी। और जो शैलो ब्रोक्स होता है, जो जो टेढ़ा मेढ़ा जो जल चित्र होता है, जो जलाशय होता है, वो बहुत आवाज करता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेन एवर यू आर वर्किंग डूइंग हार्ड वर्क, आपका कुछ एम है, डोंट टेल एनीवन। अपना मेहनत करो, धीरे धीरे मेहनत करो, धीरे धीरे, ना आवाज करो, ना गरजो, ना बोलो, मेहनत करो। अपने परीक्षा, अपने रिजल्ट, अपने जो हासिल किए हो उसे हासिल करने के बाद लोग खुद पता चल जाएगा कि आपने वो हासिल किया है। बोलो मत, बको मत, कुछ मत बोलो, चुपचाप बहते रहो एक नदी की तरह और अपना काम करते रहो। डीप रिवर्स मूव इन साइलेंस, शैलो ब्रोक्स आर नॉइजी। कभी भी नॉइजी मत बनो। साइलेंट मैन लाइक स्टिल वाटर्स आर डीप एंड डेंजरस। जो चुपचाप और शांत इंसान होता है वो बहुत ही डीप और डेंजरस होता है। डेंजरस तो मैं नहीं कहूँगा। ओके, डेंजरस वी कांट यूज, दे आर गुड मीन्स। शी हैड जस्ट वोकन फ्रॉम अ डीप स्लीप। वो अभी जो है शी हैड जस्ट वोकन, अभी वो उठी है बहुत ही गहरी नींद से। ही हैड अ डीप अफेक्शन फॉर हिज वाइफ। इतना भी क्या ज्यादा अफेक्शन करना यार वाइफ से। ओके, नो, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ही हैड अ डीप अफेक्शन फॉर हिज वाइफ। उनमें बहुत ज्यादा अफेक्शन, प्यार है एक दूसरे के प्रति। ओके, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्यार है। माई थॉट्स आर डीप इन टू यू। मेरा बहुत ज़्यादा गहरी संवेदना है आपके लिए। सो ये कुछ एग्जाम्पल था 10 वर्ड्स का जो कि मैंने लिया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। We always talk in English. So if you are not comfortable, please watch this video. I know it's very boring for you. I know you are not enjoy this video, but listen. बोरिंग रास्तों से ही कभी कभी आप सफलता की ओर बढ़ते हो। बोरिंग लगेगा बट एक दिन आएगा जब आप enjoy करोगे। ओके, सो डोंट बी फील बोर, डोंट बी फील बोरिंग, enjoy yourself, रीड, प्रैक्टिस। आपका मन आपको बुलाएगा, आपका मन आपको रोकेगा। सो जस्ट डू हार्ड वर्क। बोरिंग रास्तों से एक दिन सफलता में जरूर आप निकलोगे। ओके, सो इफ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए बस इतना ही मांगता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, बस आपको सिर्फ एक घंटी दबा देना है। उसे क्या है, उसे हमारा कुछ सपोर्ट होता है, हेल्प होता है, मोटिवेशन होता है, बस इतना ही है। मैं मेहनत कर रहा हूँ जो, इसके लिए आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ, बस सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको। और वीडियो को देखते रहो, आप सीखो, आगे बढ़ो, लाइफ में ग्रो करो, ग्रोथ करो, जो भी आपका ड्रीम है उसे आप पूरा करो। ओके, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ख्याल रखो अपना, हेल्थ अच्छा रहे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।